are going to begin with the lesson number 15 of your class 7 English, that is the world's renowned nose. So let's begin with this lesson. I record here the true story of that nose. मैंने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करी? ट्रू स्टोरी रिकॉर्ड करी उस नोज की. The owner of that world renowned nose had completed 24 years of age. जो ओनर है जिसकी वो नोज है उन्होंने अपनी एज कितनी कंप्लीट कर ली? 24 इयर्स हो चुके हैं. When the story began, जब स्टोरी बिगिन हुई थी, no one knew him before that. कोई उन्हें नहीं जानता था स्टोरी से पहले. Does the 24th year in a person's life had any special significance? क्या 24 years एक पर्सन की लाइफ में स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं? Who knows? क्या पता किसी को. If one looks through the recorded pages of world history, one finds that the 24 years had a significance in many great lives. तो अगर हम हिस्ट्री में देखें 24 years बहुत ग्रेट लाइफ की में सिग्निफिकेंस रखते हैं. Student of history need hardly be told this. स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री को मतलब बहुत हार्डली इस बारे में बताया जाता होगा. द हीरो ऑफ आवर स्टोरी वाज अ कुक. जो हमारी स्टोरी का हीरो था वो कौन था? एक कुक था. सो अ किचन वर्कर इफ यू लाइक, एक जो किचन वर्कर होता है कुक. सो ही वाज नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट. वो पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट नहीं था, होशियार नहीं था. ही कुड नॉट रीड एंड राइट. वो लिखता पढ़ता नहीं जानता था. So his words were confined to the kitchen. उसकी उसका जो वर्ल्ड था वो खाली किचन में घिरा हुआ था. उसकी दुनिया किचन में ही थी. He was totally indifferent to happening outside the kitchen. उसे नहीं पता होता था बाहर क्या हो रहा है, उसे नहीं मालूम नहीं होता था. Why should he pay attention to them? वो क्यों पे attention करे उनकी तरफ? He could eat to his satisfaction. वो अपनी satisfaction के लिए खा पाता था, सो पाता था, वर्क कर पाता था. His daily routine was confined to these activities. उसकी daily routine यही था, खाना पकाना और सो जाना. He did not know the names of months of the year. So the names of months of the year भी नहीं पता थे. So when it was time for him to receive his salary, his mother would come and take it. जब उसको सैलरी मिलनी होती थी उसकी मदर आती थी और ले जाती थी. He lived a contented life till he reached his 24 years. उसने contented life जी जब तक वो अपनी 24 years तक पहुंचा. Then an amazing thing happened. एक अच्छी चीज होती है. His nose grew slightly in length. उसकी nose grew करने लगती है, length में बढ़ने लगती है. It passed his mouth and reached the level of his chin. वो उसके mouth तक से pass कर दी, chin तक पहुंच गई. The nose began to grow in length every day. रोज बढ़ती जाती थी उसकी nose. Within a month, the nose reached his navel. एक month में उसकी navel तक पहुंच गई थी nose. Did he feel uncomfortable? क्या उसे uncomfortable feel होता था? Not in the least. He could breathe freely. अभी तक तो नहीं, क्योंकि वो freely breathe कर पा रहा था. He could distinguish between smell. वो smell में distinguish कर पाता था, मतलब फर्क पहचान पाता था. However, because of his nose, the poor cook was dismissed from service. उसकी nose की वजह से वो poor cook को उसके चीज से मतलब उसकी जॉब से निकाल दिया गया था. What was the reason? क्या reason था? No group came forward with the battle cry. कोई आगे नहीं आया. Take back the dismissed employee. इसको वापस ले जाओ. Political parties shut their eyes to this piece of frank injustice. Political parties ने अपनी आंखें बंद कर ली इस injustice के लिए. No lover of humanity came forward to help. कोई इंसानियत वाला इंसान आगे नहीं आया. The poor cook, no one had to tell him why he had lost the job. वो बेचारा cook उसे नहीं बताता तो वही कि उसने अपनी job क्यों खोई है. The reason was the people living in the house where he worked could find no peace of quiet because of his. को जो लोग रहते थे उसके घर में वो उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी उसकी वजह से. People came visiting night and day to see the longest nose one. रोज लोग आते थे उसे देखने के लिए, देखते हैं किसकी longest nose है. Photographers posted them. Photographers उसे पोस्ट करते थे. News reporters became a nuisance. News reporters आते थे उसके पास. A number of things were pilfered from the house. बहुत सारे number of things pilfered हो रही थी house से. So as the dismissed cook sat starving in his lowly hut, जैसे भूखा था वो dismissed cook अपनी हट में, he was convinced of one thing. वो convince हो गया था एक चीज से. His nose has acquired great publicity. उसकी नाक को एक अच्छी publicity मिल चुकी है. People from distant land come to see him. बहुत जो दूर के लोग हैं उसे देखने आते हैं. They stood stunned with him at his long nose. लोग उसे देख के stunned खड़े रह जाते हैं. But some touched it. कुछ उसे छूते थे. But no one asked, have you eaten today? उसे छूते थे, but कोई उससे नहीं पूछता था क्या तुमने कुछ खाया आज? Why do you look so weak? तुम इतने पतले क्यों लग रहे हो?
There was no money in the hut. कोई भी पैसा नहीं था हट में. Was he a wild animal to kept starving? क्या वो wild animal है जो रखा जाए भूखा? He might be a fool, but he was human being. वो तुम्हें पागल लगता है, वो क्या था? Human being था एक. One day he called his old mother. एक दिन उसने old mother को बुलाया. Aside to his told her in a whisper. उसने बोला, get these horrid people out. यहाँ से इन horrid people को बाहर निकालो. The mother promptly put them all out and closed the door. Mother ने सबको बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया. Good fortune dawned on the mother and son after that day. अच्छी चीज हुई. People began to bribe the mother to see the son's nose. People मिन्नतें करने लगे कि मुझे आपकी बेटी की नोज देखनी है. Some upholders of justice protested against this corruption. कुछ ने उसके corruption के against protest करने लगे. But government did not take any action. But government ने कोई भी action नहीं लिया. Many protested against the inaction of the government. कुछ ने protest करा कि government action क्यों नहीं ले रही है. And joined revolutionary parties out to sabotage the government. The income of the long-nosed one grew day by day. जो income थी long-nosed की वो बढ़ती चली गई. In 6 years the poor cook became a millionaire. 6 years में क्या वो poor cook क्या बन गया? Millionaire बन गया. He acted twice in films. उसने act करा 3 बार films में. What was audience were attracted by the technicolor features film. Audience attract होती है technicolor feature film से. The Human Submarine. 6 poet wrote poems. 6 poet ने उसके ऊपर poems लिखी about the noble qualities of the long-nosed one. 9 well-known writers wrote biography. 9 well-known writers ने biographies लिखी of long-nosed one and won wealth and acclaim. और wealth और acclaim उन्होंने जीत ली. His princely abode was also a guest. उसकी जो princely abode थी उसका guest house में open to all. उसके घर उसके लिए सबके घर खुले हुए थे. Anyone at any time could get a meal there. उसके घर में कोई भी आके खाना खा सकता था. He had 2 secretaries. उसके 2 secretaries होते थे. Both of them loved long-nosed one. सबको लंबी नाक वाले पसंद होते थे. Both of them worshipped him. दोनों उसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे. And 2 beautiful females love the same person at the same time. जब 2 beautiful females एक same person को एक टाइम पे पसंद करती है, there is bound to be trouble. फिर तो पक्की एक मुसीबत की चीज है. Trouble came into life of the long-nosed one. फिर मुसीबत आ जाती है एक long-nosed one की लाइफ में. Other people also love the long-nosed one. और लोगों को भी long-nosed one पसंद थे. That long-nosed reaching down to the navel was considered a sign of greatness. जो long-nosed अगर navel तक पहुंच जाए तो इसको sign माना जाता था greatness का. The long-nosed one gave his opinion on important world event. Long-nosed one ने अपना opinion दिया एक long world event, important world event पे. Newspaper published his comment. Newspapers ने उसके comment को publish कर दिया. And an aeroplane with a speed of 10,000 miles an hour has been built. एक aeroplane बनाया गया जिसकी speed थी 10,000 miles and within an hour वो बनाया गया. The long-nosed one commented thus on the event. Dr. Bandros, Furious Bureaus has brought a dead moth to life. उन्होंने क्या लिया है? Dead moth को life में लिया है. The long-nosed one made the following speech about. Long-nosed one ने उस पर भी speech दी थी. When people heard that highest peak in the world has been scaled, so people ने highest peak in the world को मतलब scale कर लिया, उन्होंने पूछा, they asked, what does the long-nosed one say about this? Long-nosed one क्या कहता है इस बारे में? If the long-nosed one said nothing about an event, अगर long-nosed one को उस event के बारे में नहीं कहता, it was unimportant. वो मतलब unimportant है, मतलब नहीं रखता. And so the long-nosed one was expected to comment about anything and everything. तो long-nosed one से हर कोई पूछता इस बारे में बताइए, इस बारे में comment कीजिए. Painting the watch trade, the sole publishing houses, life after death, the conduct of newspapers, hunting. It was at this time that conspiracies were hatched. इस टाइम पे क्या होती? Conspiracies hatch हुई थी. Capture the long-nosed one. Capture कर लिया किसको? Long-nosed one को. Capturing something. Taking something by physical contest, मतलब किसी को physical contest से लेके जाते थे, was nothing new. The major part of the world history consists of contest and capture. जो major part थी वो किससे consider हमारी history में क्या है? Contest है और captures है. First of all, it was the government that made an attempt to capture the long-nosed one. एक बार government ने capture करने की कोशिश की थी long-nosed one को. They tried a confidence trick. उन्होंने किसकी कौन सी trick try करी? Confidence trick को try करा. The government awarded him the
टाइटल चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वन। गवर्नमेंट ने उसको क्या टाइटल दिया? चीफ अमंग द लॉन्ग नोज वन दिया एंड गेव हिम अ मेडल, उसको मेडल भी दिया एक। इट वाज द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु टाइड द बीज्वेल्ड गोल्ड मेडल, वो प्रेसिडेंट ने दिया था उसको बीज्वेल्ड गोल्ड मेडल राउंड द नेक, जो उसको पहनाया गया था लॉन्ग नोज वन को बाय द हैंड। So the president twigs the tip of the long-nosed one. President twig करा उसकी long-nosed one की tip को। So this was filmed by newsreel cameraman and shown in all the theaters. इसको किसने फिल्म कर लिया? newsreel cameraman से and shown, मतलब उसको दिखाने लगा सब थिएटर्स में। By that time, the political parties in country came forward enthusiastically. उस टाइम political parties आने लगी। कॉमरेड लॉन्ग नोज मस्ट गिव लीडरशिप, लॉन्ग नोज वन को क्या देना चाहिए? लीडरशिप देनी चाहिए टू द पीपल स्ट्रगल, उसकी स्ट्रगल के लिए। कॉमरेड लॉन्ग नोज इंडीड हुज कॉमरेड, कॉमरेड इन व्हाट? गॉड पुअर लॉन्ग नोज वन, पुअर लॉन्ग नोज वन। द लॉन्ग नोज्ड वन मस्ट ज्वाइन द पार्टी, उसको क्या ज्वाइन कर लेना चाहिए? पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। कौन सी पार्टी को ज्वाइन करे? देयर आर मेनी पार्टीज, वहां पे तो बहुत सारी पार्टीज थी। How would the long-nosed one join different parties at the same time? और long-nosed one सारी different parties को एक same time पे कैसे join करे? So the long-nosed one said in his own tongue, उसने अपनी tongue से बोला, Why should I join party and parties? मैं क्यों join करूँ party और parties को? Me and I am too tired, मैं बहुत थका हुआ हूँ। Should I join any party? क्या मुझे कोई party join करनी चाहिए? The long-nosed one asked one of his secretaries, उसने अपनी secretary से पूछा। She said, Why should you? उन्होंने बोला क्यों करनी चाहिए आपको? But that time one of the political parties had come out with the slogan, उसी टाइम एक political party एक slogan लेके आई। Our party is the long-nosed one party, हमारी पार्टी क्या है? long-nosed one party है। The long-nosed one party is the people's party, और जो long-nosed one party होती है वो people लोगों की पार्टी होती है। So members of the other parties were incensed by this, members incensed हो गए और other parties के। They got at one of the secretary, उसके secretary के पास जाते हैं and made her issue a scathing statement against the long-nosed one, और उन्होंने क्या बनाई? एक scathing statement बनाई किसके लिए? long-nosed one के लिए। The long-nosed one has deceived the people, उन्होंने deceive कर दिया people को। He has been cheating them all this while, उसको cheat करने लगे। He has made me a partner in this fraud, उन्होंने पार्टनर बना दिया इसको फ्रॉड में। Let me declare the truth to the public, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक को, सच्चाई बता देता हूँ। The long-nosed one is made of rubber, वो किससे बनी? जो long-nosed one, the long-nosed जिससे बनी है वो रबर से बनी हुई है। Wow! All the newspapers flashed the news on their front page, फ्रंट पेज पे वो न्यूज घूमने लगी कि long-nosed तो रबर से बनी हुई है। The nose of the long-nosed one is made of rubber, जो nose है long-nosed one की रबर से बनी हुई, फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर्स पे छपने लगा। Would the people keep quiet at this? क्या लोग शांत बैठे रहेंगे इस बात पे? Would they not reach in anger? क्या वो गुस्से में रीच नहीं करेंगे? Cables, telephone calls, letters from all of the world. The president was allowed not peace or was allowed no peace or quiet. Destructions to the rubber nose of the long-nosed one. Destructions होने लगी। Down with the long-nosed party. Long live revolution. फिर एक आ गई the long-nosed party, long live revolution. So when the anti-long-nosed party, जब एक क्या आती है? एक anti-long-nosed party आती है, उसने एक statement दिया। Put one on the statement, the opposing party made the other secretary issue a counter statement, जो एक secretary है उसने एक और issue करा counter statement। Beloved countrymen, citizens, what she had said is a lie, जो भी उसकी secretary ने बोला वो झूठ है। She was trying to keep for herself the wealth and good name of the comrade long-nose, वो अपने पास अपनी wealth रखना चाहती है comrade long-nose की। One of her brother is in the opposite party, उसका एक opposite party में उसका भाई है। Let me reveal the true colors, मैं reveal कर देता हूँ true colors members के और दूसरी पार्टी के। I am the faithful secretary of comrade long-nose, मैं क्या हूँ? faithful secretary हूँ comrade long-nose का। I know for a fact that the long nose of comrade is not made of rubber, मुझे पता है उसकी long nose of comrade की nose रबड़ की बनी हुई नहीं है। It is a real or as my own heart beating inside me, वो इतनी सच है जैसे मेरा अपना हार्ट मेरे अंदर बीट कर रहा है। Long live the member of party supporting comrade long nose, long live revolution, support करते रहेगी long nose, long live revolution. What was to be done? अब क्या किया जाए? There was confusion in the minds of people, लोग confuse होने लगे।
The leaders of the party against the long-nosed one began finding fault. वो फाइंड करने लगे उसकी गलतियां with the president के साथ and the government. Stupid government, उन्होंने बोला stupid government. They gave the title of chief among the long-nosed one. उन्होंने chief among the long-nosed one का title क्यों दिया? To the deceiver of the people. They gave him a gold medal. उन्होंने उसको gold medal दिया. There is betrayal of national interest in all this. इसमें betrayal हो रहा है national interest का. इसमें the president must resign. President को resign कर देना चाहिए. The ministry must resign. Ministry को भी resign कर देना चाहिए. The rubber-nosed one must be killed. और जिसकी rubber-nosed one है उसे मार देना चाहिए. The president reached angrily. President को सिर्फ पहुंचा उनके पास. One morning, the army and their tanks surrounded. एक दिन जब वो आर्मी और उसके टैंक्स से सराउंड कर लिया हाउस ऑफ पुअर लॉन्ग-नोज्ड वन के हाउस को. He was arrested and taken away. उसको अरेस्ट करा गया और ले जाया गया दूर. There was no news of long-nosed one for some time. कोई न्यूज नहीं आई उसकी. So people forgot about existence. People लोग भूल गए कि वो रहता भी था कभी. Then came fresh news. एकदम fresh news आती है with the impact of nuclear bomb. Do you know what happened? क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? Just when the people had forgotten everything, came a brief. जैसे people लोग भूल गए थे सब चीज को, एकदम brief आता है. Announcement आती है president से. Announcement from the president. The trial of the chief of long-nosed one will take place on March 9th. जो ट्रायल होता है chief long-nosed one का उसका March 9th को होगा. Expert doctors who come as representatives of 48 countries. Expert doctors आएंगे representative 48 countries के उसको examine करने. All the newspaper of the world will be represented. सारे न्यूज़पेपर वर्ल्ड के रिप्रेजेंट करेंगे. The proceeding will be filmed. जो प्रोसीजर होगा वो उसको फिल्म करा जाएगा. People must keep calm. People को शांति रखनी चाहिए. People are people. लोग तो लोग हैं. They could not keep calm. वो शांत नहीं बैठेंगे. They came in large numbers into the metropolis. वो large number में आ गए metropolis में. They set fire to police station. उन्होंने आग लगा दी पुलिस स्टेशन को. They destroyed government buildings. उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी, खत्म कर दिया. March 9, 11 a.m. March 9 थी, 11 a.m. थे. The square in front of presidential palace was a vast sea of humanity. जो square था presidential palace में एक vast sea of humanity इकट्ठा हो गया. The loudspeaker flared forth. People must be disciplined. People को शांति रखनी चाहिए. That examination has begun. जो examination है वो start हो चुका है. The doctors surrounding the long-nosed one in the presence of president. डॉक्टर ने long-nosed one को सराउंड कर लिया प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में. एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे वहाँ. One doctor blocked the nostrils. एक डॉक्टर ने ब्लॉक करा nostrils को of the long-nosed one. He immediately opened his mouth wide. उन्होंने एकदम उसके मुंह को वाइड खोल दिया. Another doctor took a needle and punctured the tip of his nose. दूसरे डॉक्टर ने निडल ली और पंचर कर दिया उसकी नोज को. To his amazement, a drop of blood appeared at the tip of the nose. एकदम क्या हुआ? Drop of blood आ गई tip of the nose पे. The doctors gave her unanimous verdict. डॉक्टर ने उसे unanimous verdict दिया. The nose is genuine. जो nose है ये सच की nose है, लंबी nose है पर सच के रबड़ की नहीं है. So one of the female secretaries kissed the long nose, one of the tip of the nose. एक female secretary ने kiss कर दिया उसकी nose पे, tip पे. Long live comrade, long nose. So long live comrade, long nose. Long live the chief of the long nose ones. Long रहे मतलब हमेशा जिंदा रहे chief long nose one का. Long live the progressive people party of the long nose one. So as this shouting and revelry ended, जैसे ये आवाजें आने लगी, the president thought of another gimmick. President एकदम सोचता है दूसरी चीज. gimmick का मतलब एक publicity stunt का. He nominated the long nosed one. उसे nominate करा long nosed one को member of parliament. MP बना दिया उसे. That was the end of it all. वो क्या था? इस सब चीज का end हो चुका था. But the parties of which the long nosed one was not a member formed a united front and began to say the ministry must resign. उसने बोला ministry को resign कर देना चाहिए. Look at the way falsehood was being perpetuated. तो मतलब देखिए कि किस वे में falsehood को perpetuate करा गया, मतलब continue करा गया. Would there not be confusion of thoughts? क्या कोई confusion नहीं रहेगी thoughts की? What would the people intellectuals do? अब people what would the poor intellectuals do? Poor intellectuals क्या करेंगे? So this story is given by V.M. Bashir. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this story. Thank you and have a great day.